Hello and welcome back. In this lecture I will discuss problem from previous workbook. Question number 1 and 2 we have already discussed. So let us start our discussion with question number 3. Determine x and y component of each vector. So 1, adjacent axis is x-axis, so x component is 4 cos 30 and y will be 4 sine 30 and both of them is positive. Second, vector b, adjacent axis is x-axis and vector b is in fourth quadrant, x is positive and y is negative, so x component will be 5 cos 60 and y will be 5 sine 60 and y component will be negative. Third, show negative axis with help of dotted lines, and then we are interested in angle which is less than 90, so this angle is 45. You can take either angle, both is 45, so it does not matter. And this vector is in third quadrant, so c cos 45, c sine 45, so c by root 2 minus c by root 2. 4, vector d, adjacent axis is y-axis and this vector is in second quadrant because x is negative, y is positive. Y component will be 6 cos 60 and x component will be 6 sine 60 with negative sign. Next, vector e is along x-axis, so x component is equal to its magnitude and y component is 0. Sixth, vector f is along negative y-axis, so x component is 0 and y component will be minus 3. Next, vector g is along negative x-axis, so x component is minus 2 and y component is 0. 8, h vector is along positive y-axis, so x is 0 and y component is plus 4. Next, this vector a, it makes an angle 130 degree with x-axis, or you can say it makes an angle 50 degree with negative x-axis. So adjacent axis is x-axis, vector is in second quadrant, so x component you can write as 5 cos 50 with minus sign and y component will be 5 sine 50. Now in this question you can also argue that if you take angle with y-axis, then that angle is 40 degree. So in that case, adjacent axis is y-axis. You will say y component is 5 cos 40 and x component is minus 5 sine 40. So there is a difference in the answer, but look carefully. Cos 50 is equal to sine 40 and sine 50 is equal to cos 50 or not, so it's same thing. You can take angle with any axis, either x or y, whatever you feel, whatever you find convenient. Number 10, adjacent axis is x-axis, vector is in third quadrant, so x component is 4 cos 30 with negative sign and y also is negative, minus 4 sine 30. Next, vector c, it is in fourth quadrant, adjacent axis is x-axis, so x component is 5 cos 45 and y is 5 sine 45 with minus sign. 12, vector a is along negative y-axis, so x component is 0 and y component is minus a. 13, vector is in first quadrant, adjacent axis is x-axis, so x component is 38 cos 60 and y component is 38 sine 60. Next, given angle is 135, we can take this angle, or with x-axis both of them is 45 degree. Vector is in second quadrant, so x component is minus b cos 45 or sine 45 is 1 by root 2, y component is b into 1 by root 2. Next, vector c is in third quadrant, angle is 210, we can take this as 30 degree.
So adjacent axis is x axis. So x component is c cos 30 and y is c sin 30, as vector is in third quadrant, so both negative. But you can also write this as minus c sin 60 and this component as minus c cos 60, because angle with y-axis is 60 degrees. So adjacent axis for 60 degrees is y-axis, so that will be cos, another one will be sine. But point is cos 30 is equal to sine 60 and cos 60 is equal to sine 30. So any angle you can take. Next, this angle is 330, so we can take this to be 30 degree. Vector is in fourth quadrant and adjacent axis is x axis, so x component is 35 cos 30 and y component is 35 sin 30 and y is negative. Question 4. Determine x and y components. Of part 1, vector A is along x axis, so y component is 0 and x component is magnitude of that vector. Vector B makes an angle alpha with x axis, so x component is b cos alpha and y component is b sin alpha, both positive. Vector C is along positive y axis, so x is 0 and y component is plus c. Next, vector D makes an angle gamma with y-axis. Let me extend this. This is negative x-axis. This one is negative y-axis. Vector is in second quadrant. So adjacent axis is y-axis. So y component is D cos gamma and x is D sin gamma, but x component is negative. Next, vector E is along negative x-axis. So x component is minus e, y component is 0. Number 6. क्या आता है आंसर? तो आज के क्लास से तुम क्या सीखे हो ये बताओ। कंपोनेंट अगर निकालना है तो दो इशू है, क्या? एडजेसेंट एक्सिस एंड क्वाड्रेंट प्लस साइन एंड आइदर कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन और प्लस साइन एंड और माइनस साइन। डन। जहां तक जीरो का सवाल है उसमें तो कुछ करना ही नहीं, देखते ही पता होगा या नहीं। सो इज दिस वेक्टर अलोंग एनी एक्सिस? फिजिक्स में यू विल कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अब इसके पहले जो क्वेश्चन सब था उसमें वेक्टर और एक्सिस के बीच का एंगल वाज ऑब्वियस और नॉट, वाज गिवन और नॉट। यहाँ पे ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना, तो पहला काम जो हम बता रहे थे, ये एक हैबिट डेवलप कर लो कि डॉटेड लाइन से पहले नेगेटिव एक्सिस को शो कर दिया करेंगे। ऐसा डायग्राम में शो कर, तो ये पिक्चर थोड़ा बेटर हो गया देखो। और जैसे ही तुम ये ड्रॉ करते हो तो एक इशू सेटल हो गया कि क्या क्वाड्रेंट है इसका। थर्ड, दोनों नेगेटिव आएगा ना, उसमें भी अगर तुमको कोई कंफ्यूजन है, इसलिए हम लोग स्टार्ट किए थे लेवल करने से। अगर इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी व्हाटसोएवर, यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर और नॉट, फ्रॉम वेयर ऑन व्हाट? हेड ऑन एक्सिस। ये 2 फुट होगा, देख लो ये फुट किस एक्सिस पे मेजर हो रहा है, पॉजिटिव वाई पे या नेगेटिव वाई पे, और ये किस पे मेजर हो रहा है, नेगेटिव एक्स पे। तो दोनों कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव। इसलिए पहला क्वेश्चन था लेवल करना। सो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी व्हाट कैन यू डू? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, एक्सिस। बट वेक्टर कहाँ से रीड्रॉन होना चाहिए, ओरिजिन, वो तो है ही यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई? तो वो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन। तो ऐसा ड्रॉ कर दो, एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, हो गया। नेक्स्ट, we need to know angle between vector and either x-axis or y-axis, isn't it?
क्या चाहिए होगा तुमको? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डू वी शुड वी गेट इनटू दैट रिगरस अप्रोच कि नहीं हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ही डायरेक्शन निकालना है? वो कम्बरसम होगा या नहीं, वो डिफिकल्ट होगा या नहीं? तो तुम किसी भी एक्सिस के साथ एंगल प्रेफर करोगे, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और वाई। तो ये एंगल या ये एंगल कुछ बता सकते हो, यही ना कन्वीनियंट एंगल होगा तुम्हारे लिए। कुछ दिख रहा है देखो तो बेसिक ज्योमेट्री से, दिस एंगल और एनी वन आउट ऑफ दीज टू, कोई भी एंगल दिख रहा है? ये बताओ हाउ मच इज दिस एंगल? ठीक से ये और ये कितना एंगल है दोनों के बीच? यहां से यहां ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल क्या है π/2 माइनस थीटा। और यहां के बीच कितना एंगल है? दिस इज वर्टिकल और नॉट, और दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल है 90। तो ये क्या बचा? ये टोटल 90 है या 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ कितना होगा थीटा। देख लो, चेक करो ये थीटा है या नहीं, खुद चेक करो ज्योमेट्री। हम बताए थे ना फर्स्ट क्लास में, जो 9-10 में ज्योमेट्री पढ़े हो तुम, वो फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है, इसलिए चेक करो, वेरीफाई दैट कि दैट एंगल इज थीटा और नॉट। है कैसे? वाई? ये है ना, तुम ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किए, यहां एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो ये क्या बचा 90 माइनस थीटा। हाउ मच इज दिस एंगल और हाउ मच इज दिस एंगल? तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ थीटा, वही थीटा है ना। सो दिस इज थीटा। नाउ द मोमेंट यू नो दिस इज थीटा, ये कौन सा एक्सिस है? तो कौन सा एक्सिस एडजेसेंट एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है? सो हाउ मच विल बी वाई कॉम्पोनेंट, साइन और कॉस थीटा। एंड व्हाट अबाउट एक्स कॉम्पोनेंट? व्हाट अबाउट प्लस एंड माइनस साइन? दिस इज योर आंसर। ठीक है। अब एक बहुत पावरफुल मेथड हम तुमको बता रहे हैं, यहाँ लिखो मैथ स्किल। और जब कभी भी फिजिक्स में हम लोगों को एंगल निकालना होगा, दिस इज द मेथड आई विल यूज, और वो तुमको भी पता है। एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। सपोज यू हैव टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन दोज टू लाइंस इज थीटा। दो लाइन है, उसके बीच का एंगल कितना है थीटा। यहां पे कोई एक पॉइंट लो, कहीं भी एनी पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन बोथ द लाइंस और नॉट। डू दैट, ड्रॉप परपेंडिकुलर्स ऑन बोथ द लाइंस and let me label line 1, line 2, perpendicular 1, perpendicular 2. Meaning clear है? Line 1, line 2, perpendicular 1, perpendicular 2. ये बता सकते हो how much is this angle? बेसिक ज्योमेट्री से यहाँ डायग्राम में कुछ दिख रहा है। ये कितना एंगल है? ये कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? कितना? 90 माइनस थीटा। हाउ मच इज दिस? ये कितना है? थीटा। दैट एंगल इज थीटा और नॉट? देख लो क्या मतलब हुआ इसका। एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू दोज टू लाइंस हमेशा क्या होगा? इक्वल। ऐसा लिख दो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड perpendicular to those two lines, angle between two lines and perpendicular to those two lines are always equal, are always equal. ठीक है। नाउ उस फैक्ट को जानने के बाद क्या ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान होगा? देखो तो फिर से ड्रॉ करो ये डायग्राम। ड्रॉ दिस।
ये थीटा है। Let us do one thing. This is line 1, this is line 2. थीटा गिवन है ना, जो भी एंगल तुमको दिख रहा है डायग्राम में, जो आई मीन फिगर में, वो दो लाइन के बीच का एंगल है, उसको ऐसा लेवल कर दोगे। दो परपेंडिकुलर दिख रहा है तुमको, दिस इज परपेंडिकुलर वन और नॉट, ये बताओ। एंड व्हाट अबाउट दिस है, कितना होता है एंगल बिटवीन टू लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दोस टू लाइन? तो हाउ मच इज दिस एंगल? दैट्स इट। वही तुम लिखे हो ना यहाँ, और इसमें उतना टाइम भी लग रहा है, बिकॉज देखो ये बहुत, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। और एग्जाम, जब भी तुम एग्जाम में अपीयर होगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, टाइम इज द इशू। अगर 3 घंटे की बजाय कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 4 घंटे का होना, तो लोगों का नंबर 20-30% बढ़ जाएगा। तो इशू नॉलेज है या टाइम मैनेजमेंट है। अब अगर मान लो हमको एंगल चाहिए, जो कि फिजिक्स में हमेशा चाहिए होगा तुमको, और तुम इतना एंगल निकालने में समय लगा रहे हो और वो गलत आ गया, तो गलत आ गया तो यहाँ पे तुम जो कॉस लिखे थे वो क्या हो जाता है, साइन, सब कुछ गलत हो गया। और एक तो टाइम भी गया, और अगर ये सब तरीका यूज करें तो कितना टाइम लग रहा है एंगल निकालने में, तुरंत आ जाएगा ना। तो क्या इश्यू, क्या करोगे हम? और तुम देखना पूरे फिजिक्स में हम कितनी बार इस फैक्ट को यूज किए, कहीं भी हम लोगों को 99% ऑफ केस हम लोगों को उसी से काम हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइन एंड परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, तुमको करना क्या है मेंटली, केवल किसको आइडेंटिफाई कर लेना है, दो लाइन, वो एंगल दिया हुआ है और उससे दो परपेंडिकुलर, वहां से एंगल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर g is along negative y axis, so y component is minus g, x is 0. Vector h makes an angle gamma with negative y axis, so negative y axis is adjacent axis, so y component will be h cos gamma with minus sign, and x component is h sin gamma. Question 5, component of vector is scalar or vector? So by default it is a scalar, so appropriate is scalar. Component of vector may be positive, it may be negative, or it may be 0. Unit vector is vector divided by its magnitude. It is in same direction as parent vector. If this is direction of vector a cap is in same direction. Question 8, can scalar be converted into vector? If yes, how? Answer is yes, and most simple way is multiply it by unit vector. So if 2 is a number or scalar, we multiply it by unit vector, say I cap, we get a vector of length 2 and direction along positive x-axis.